Hello and welcome. Welcome to learning session number 4 of chapter number 4 of science 1, which is effects of electric current. Okay. So the topics we have covered so far are we have seen introductions and we had seen or we had revised terms like resistance, charge, current, potential difference, power, etc. Then we had seen how is energy transferred in an electric current and we had seen Joule's law of heating, right? Um, so according to Joule's law, the heat produced in a circuit is equal to I squared RT. Okay, I is current, so current into current. RT is resistance into time, the time for which the current is flowing through the circuit. Next, we had seen derivation of Joule's law in 4 simple steps, and we had seen the heating effect of electric current. Okay, so heating effect of electric current had two main subtopics. One was fuse wire. So if a lot of current is flowing through your through the wires of your home, then it can catch fire, right? So to avoid that, we put a fuse wire. So if lot of current flows through fuse wire, it is going to melt and it is going to stop the flow of current, and hence no fire will be caught at your house. Second was overloading. What is overloading? So basically overloading is fuse wire for a transformer. Okay, so whatever electricity is coming from the transmission lines, they cannot be directly sent to our homes. Okay, because its voltage needs to be adjusted to 220 volts. So that adjustment is done by transformers. And during summer time, many people use air conditioners. Many people switch on their lights in the evening. Many shopping malls and shops will have their lights on and their ACs on. Hence, lot of power is used in summertime, right? So when lot of power is used in summertime and the transformer cannot process that much amount of current, then the fuse of transformer is going to blow up. Not blow up, the fuse wire is going to melt, and because of that the current is going to stop coming to our homes. That's why for few minutes sometimes in summertime our electricity is cut off. That is generally due to overloading. Okay, our transformers cannot take the load of so much current which is being drawn. Okay, today we are going to see magnetic effect of electric current. Till now we have only seen हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट? अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है किसी सर्किट से तो हीट होने शुरू हो जाएगा उस सर्किट में, और कितना हीट वो जूल्स लॉ से पता चलेगा. बट टुडे वी आर गोइंग टू सी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द conductor. You're going to see the right hand thumb rule to tell the direction of that magnetic field, and finally we will see magnetic field produced by current through a circular loop of conducting wire. What is loop? लूप यानी कोई भी क्लोज्ड फिगर. ओके, अगर मैं अपने उंगलियों से ऐसा गोल बना दूं तो एक क्लोज्ड फिगर है, राइट? सो जैसे जो कोई भी क्लोज्ड फिगर होगा दैट इज अ लूप. ओके, अ सर्कल इज जनरली अ क्लोज्ड फिगर. सॉरी, बिकॉज सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर यू कैन कॉल इट एज अ लूप. ये भी एक छोटा सा लूप बन गया. ओके, सो इफ यू मेक अ लूप, सर्कुलर लूप यानी सर्कल शेप में एक लूप बना दिया किसका? कंडक्टिंग वायर का. तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखने वाले? दैट इज the last topic that we will see in today's learning session. Okay, the objectives for today, we are going to do 3 objectives simultaneously today. Okay, first is explain magnetic effect of current. Second is state right hand thumb rule. You have to by heart this particular rule. Okay, right hand thumb rule. And there are 2 more rules which are going to come in this chapter. Okay, Fleming's right hand rule, Fleming's left hand rule. So you need to by heart all of them. Next, students will be able to explain magnetic effect produced by current through a circular loop of conducting wire. So यहाँ पे जो last topic है, you should be able to explain them and explain the important features of the magnetic field produced by a circular loop of conducting wire. Okay, so these are the objectives for the day. Okay, so let us begin from magnets. Okay, what are magnets? Magnets are basically pieces of material which has a north pole and a south pole. Okay, so it has a north pole and a south pole. And what is the speciality of magnets? One is if you keep north together or south together, they're going to repel each other. Okay, it's very much like charges ka attraction and repulsion. If positive comes together, they are going to go away from each other. If negative comes together, they're going to go away from each other. If positive and negative come together, they're going to attract each other, right? So similarly, if you bring north near to north, if you bring the north pole of 2 magnets together, they are going to
push each other away. Okay, so that's what you can see happening here. यहाँ पे नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास में आ रहा है, तो उसको पुश कर रहा है, टच होने से पहले पुश हो रहा है. ओके, वो टच नहीं हो रहा है दोनों. सो दैट इज वन थिंग. एंड सेकेंडली, अगर नॉर्थ और साउथ पोल को साथ में लेके आ गए तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो उसको पुश किए बिना ही वो दूसरा मैग्नेट अपने आप पहले वाले मैग्नेट के पास आ गया. सो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स इफ द सेम पोल्स आर coming together, and attractive force if opposite poles are coming together. Okay, so that is magnet. और ऐसा क्यों हो रहा है? That is happening because magnets have their own magnetic field around them. Okay, so यहाँ पे जो lines है, these are magnetic field lines of force. Okay, magnetic fields lines of force. So because of this magnetic field, they are either attracted to each other if they are opposite poles, and they are pushed away from each other if they are opposite poles. Okay, so that was a brief revision about magnets. Okay, next, compass. What is a compass? Compass is basically made of a small needle, and the red part of the needle generally points towards north. Okay, so that's our compass, right? Everyone knows about compass. Why is that happening? Why does the needle of the compass always point towards north? ऐसा क्यों होता है? The answer is, our earth is also like a giant magnet. Okay, our earth is also like a giant magnet. और अर्थ का भी एक साउथ पोल है, मैग्नेटिक साउथ पोल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. सो यहाँ का जो कंपास का नॉर्थ पोल है, दैट विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल. व्हाई? बिकॉज ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. तो इसका नॉर्थ पोल और अर्थ का साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है. तो अभी अर्थ तो कंपास के हिसाब से मूव नहीं होने वाले, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा, राइट? तो क्या मूव होने वाला है? नीडल का मास बहुत कम है, सो नीडल काफी इजीली मूव हो सकता है, इसलिए नीडल मूव हो जाएगा. सो दैट द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ. सिमिलरली, साउथ पोल ऑफ द कंपास पॉइंट्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ. ओके, सो नॉर्थ का जो अर्थ है वो मैग्नेटिक साउथ पोल है अर्थ का. सिमिलरली, नॉर्थ का जो साउथ पोल है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है. ओके, सो the compass always points towards north pole because the earth is also acting like a giant magnet. Earth also has its own magnetic field, and because of this magnetic field, the north pole of the compass always points towards north, which is south magnetic pole of earth. Okay, great. So now we also know what are compasses and how do they function. Next, what happens when you bring a magnet near a compass? So magnet has its own magnetic field, right? magnet का खुद का magnetic field है. So अगर तुम लोग ने magnet को बहुत ज्यादा पास लेके आए एक compass के, then the compass is going to start moving. Okay, so compass किसको react करता है? compass reacts to magnetic field. If there is a magnetic field around, the compass is going to react. Okay, that's what I want you all to gain from this particular slide. What you need to remember is, अगर magnetic field होगा आजू बाजू तो compass move करेगा. अगर magnet नहीं होगा आजू बाजू तो it is going to arrange in north south direction. क्यों? क्योंकि it is reacting to earth का magnetic field. बट अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो उसके हिसाब से भी वो चेंज होने वाला है. ओके, so let us do an experiment now. Okay, what are we doing in the experiment? We have a circuit here. Okay, here is the battery of cells. Here is the positive terminal of the battery of cells. Here is the negative terminal of battery of cells. So electricity is going to move from positive terminal to negative terminal, right? Here you have a key. So key यानी switch की तरह है. अगर key को अंदर डाल दिया तो the circuit is complete and the current will start flowing. So what I'm also going to do is I'm going to bring a magnetic needle, or you can bring a compass. Compass के अंदर जो needle होता है, that is magnetic needle. So I'm going to keep a magnetic needle near the conducting wire. Okay, and then when I plug the key, I'm going to see if there is any change in the magnetic needle. Okay, so when you actually do this, what are you going to find here is, यहाँ पे देखो, as the plug key is put in, यानी switch on कर दिया, then current will start flowing through this wire. Okay, यहाँ पे पूरा का पूरा circuit नहीं दिख रहा है, but there is a circuit connected. You are only seeing this particular part. You're only seeing a small part of the conducting wire. Okay, so once the current starts flowing from the conducting wire, the compasses start changing. Okay, compasses का direction change होने लगता है. The compass starts reacting to the current.
Okay, so what does that mean? We had seen in the previous slide, right? When you bring a magnet or a magnetic field near a compass, the compass starts moving. So if the compass is moving here, when you flow electric current, what does that mean? यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो a magnetic field भी है, right? Because compasses are moving, इसका मतलब है कहीं ना कहीं magnetic field भी है. Okay, so that's our conclusion. What is our observation from this particular slide? That whenever there's a current, there is a magnetic field. Okay, so these are our conclusions. The magnetic field is observed because of the current in the wire. यहाँ पे magnetic field कहाँ से आ रहा है? Magnetic field तभी आ रहा है जब current is flowing through this particular wire. Okay, next, this means electricity and magnetism are closely related. हमें क्या लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज होती है जिसमें चार्ज फ्लो होता है, एंड मैग्नेटिज्म अलग चीज होती है जिसमें एक मैग्नेट इन्वॉल्व होता है, मैग्नेट इन्वॉल्व होता है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व होता है. बट इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव होता है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बोथ ऑफ देम हैव सम कनेक्शन बिटवीन देम. ओके, द फर्स्ट पर्सन टू एक्चुअली फाइंड दिस वाज Faraday. Okay, he's a very interesting scientist to study about. I think when I was young, I saw many documentaries about Faraday. So if you're interested, you should check out Faraday's documentary, okay, and how he came to these experiments, how he found the connection between electricity and magnetism. It's a very important connection. Okay, the beginning of the chapter I told you, right? Why does fan work? It is because of some effect of electric current. So Faraday had a very important contribution in our science, and many of our objects work because of Faraday's principles today. Okay, so ये जो connection between electricity and magnetism, all these were found out by Faraday. Okay, then another conclusion is moving charge causes magnetic field. Okay, क्यों? क्योंकि जब प्लग की डाल देते हैं या फिर जब स्विच चालू करते हैं तभी कंपास घूमना शुरू हो जाता है, राइट? विच मीन्स जब करंट फ्लो हो रहा है सिर्फ तभी मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे करंट बंद हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड विल गो अवे. ओके, सो मूविंग चार्ज कॉजेज मैग्नेटिक फील्ड. मूविंग चार्ज मतलब जब भी चार्ज मूव होता है उसको हम करंट बोलते हैं, राइट? व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ चार्जेस. सो मूविंग चार्ज मीन्स करंट, सो करंट कॉजेज मैग्नेटिक फील्ड, and this is called electromagnetism. Okay, so these are our conclusions. यहाँ पे observations क्या थे? When you switch on the circuit and electricity passes through this particular conductor, the compasses start moving. So that was our observation, and our conclusion is observation को देख के conclusions बनाते हैं. Okay, तो conclusion ये है कि जो magnetic field, सबसे पहली बात तो magnetic field है आजू बाजू, इसलिए वो compasses move हो रहे हैं. सेकेंडली वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से आ रहा है क्योंकि करंट है. ओके, so these are our conclusions. Let us move ahead. Okay, there's an interesting question you all can ask yourself. Okay, so moving charge हम लोग ने देखा which is current causes magnetic field. So जब चार्ज मूव हो रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है. ओके, so उसका उल्टा भी ट्रू है क्या? If we move a magnet, will it cause electric field? तो चार्ज मूव हो रहा है, let me increase the size. Okay, so when charge is moving, it is causing an magnetic field. So when you move a magnet, will it cause an electric field? That's the question. Okay, I'm not going to give you all the answer. You'll have to think about the answer by yourself. Okay, don't just try go on Google and start finding the answer. Try to think about it and try to find out reasons why you think the way you think. If moving charge causes magnetic field, will moving magnet cause electric field? That's the question. Okay, so I'm leaving the task of finding the answer to this question on to y'all. Okay, another experiment let us try. In this case again you can see a circuit over here. Okay, यहाँ पे arrow का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस तुम लोग चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड रेजिस्टेंस है 100 ohms तो 100 ohms ही रहेगा. तुम 100 ohms का एक स्विच चेंज करके 50 कर सकते हो, 150 कर सकते हो. So जब ऐसा चेंज करने वाला रेजिस्टेंस होगा उसमें हम लोग एरो डाल देते हैं. ओके, अगेन हियर देयर इज एन एमीटर एक्स्ट्रा डाल दिया. एमीटर किसके लिए? करंट को चेक करने के लिए कि करंट कितना है. ओके, यू हैव बैटरी हियर एंड यू हैव अ की हियर. व्हाट दे हैव डन इज यहाँ पे कार्डबोर्ड डाल दिया. ओके, व्हाट इज दिस? अ कार्डबोर्ड. ओके, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू पुट सम आयन का आयन डस्ट और आयन फाइलिंग. आयन यानी लोखंड. ओके, सो यू कट लोखंड इन स्मॉल स्मॉल पीस और उसका इतना छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल्स बना दो आयन का. Why are we taking iron? Because we know कि iron is attracted to magnets, right?
सो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, तो ये जो आयन हम लोग डस्ट वहां पे डालेंगे वो भी रिएक्ट करेगा, राइट, मैग्नेटिक फील्ड को, बिकॉज वी नो आयन इज अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स. ओके, सो दैट्स व्हाट वी गोइंग टू चेक. Once you switch on the key over here, then current will start flowing from positive terminal to the negative terminal. And because of the current, तुमने यहाँ पे जो आयन के डस्ट पार्टिकल्स डाले या फिर आयन के छोटे छोटे टुकड़े डाले, that are those are going to react, they are going to change somehow. Okay, so that's what we're going to try to find. Okay, so here they have said iron filings. Iron filings क्या है? लोखंड के छोटे छोटे टुकड़े. So if you can see here, यहाँ पे पहले डस्ट डाल दिया है और जैसे ही करंट चालू होता है, दे स्टार्ट फॉर्मिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ओके, सर्कल्स फॉर्म करना शुरू कर देते हैं. सो इसका मतलब क्या है? वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कल्स फॉर्म करना शुरू करे. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड. वो हम लोग ने पिछले एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया था. सो वी नो कि व्हेनेवर करंट इज फ्लोइंग, देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड. अभी वो मैग्नेटिक फील्ड दिखता कैसे है, उसके लाइंस कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग ने मैग्नेट देखा था, वी कुड सी, राइट, नॉर्थ से लेके साउथ तक उसके मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जा रहे थे. सो कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे दिखते हैं, ये यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है. ओके, कैसे पता चल रहा है? बिकॉज जो कुछ भी आयन का डस्ट पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिएक्ट करके उसी लाइन में खुद को एडजस्ट कर रहा है. ओके, so how does magnetic field lines look like when there is a current going from a conductor? वैसे concentric circles में दिखते हैं. concentric यानी जिसका सेंटर सेम है. ओके, so एक छोटा सर्कल, उसके बाहर एक बड़ा सर्कल, उसके बाहर एक बड़ा सर्कल, सबका सेंटर सेम होगा. So that is our conclusion from this particular experiment. We now know कि magnetic field of lines, how do they look like? Okay, they've also put a magnetic needle over here. Okay, magnetic needle से तुम लोग क्या चेक कर सकते हो? So I told you, right, resistance कम ज्यादा कर सकते हो. And यहाँ पे ammeter रखा है to measure current. So if you increase the current, what is going to happen? And if you decrease the current, what is going to happen? So when you increase the current, the magnetic field is going to be more strong, more intense. And if you decrease the current, कम current को कम कर दिया, then the magnetic field lines will be weak. Okay, it won't be very intense. So that is why they have kept a magnetic needle also over here. Okay, but one question we haven't really answered is what will be the direction of magnetic field? Okay, circle का भी ये जो line है, इसका क्या direction है magnetic field का? For example, in a bar magnet, the direction is always from north to south, right? So if this is your bar magnet, this is north side, this is south side, the direction will always be from north to south. Okay, so in this case, what is the direction? क्या ये clockwise घूम रहा है? In this direction, this clockwise direction, right? Clock की तरह. Or is it the opposite, anti-clockwise? Okay, clock का जो direction है उसका उल्टा. कौन से direction में flow कर रहा है? So to tell which direction, what is the direction of the magnetic field lines, we have the right hand thumb rule. Okay, so क्या करना है? I'll read the first line out. Imagine that you have held the conductor in your right hand in such a way that your thumb points in the direction of current. Imagine करो कि तुम्हारे हाथ में conductor है. Okay, so this conductor is in your hand. Okay, from this conductor itself the current is flowing, right? So if this conductor is in your hand, then, and अभी यहाँ पे करंट भी कैसे फ्लो कर सकता है? इट कैन फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, राइट, या नीचे से टॉप तक करंट फ्लो कर सकता है, या फिर इट कुड बी ऑपोजिट डायरेक्शन, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो इज इट फ्लोइंग फ्रॉम बॉटम टू अप और टॉप टू बॉटम? दैट इज द क्वेश्चन. सो इमेजिन यू हैव हेल्ड द कंडक्टर इन योर हैंड, तुम लोग ने हाथ में पकड़ लिया उस वायर को, और तुम्हारा जो थंब का डायरेक्शन है, दैट इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, सो अगर मेरा थंब ऐसे है, इट मींस द करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड. सो लेट मी टेक अ पेंसिल. ओके, सो इफ दिस इज माय कंडक्टर, ओके, एंड इफ आई होल्ड इट दिस वे, देन माय थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो करंट कहां से जा रहा है? नीचे से लेके ऊपर, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है. सो यहाँ पे ऐसा कहीं पे तो सर्किट होगा. सो करंट इज फ्लोइंग दिस वे. देन टर्न योर फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर. सो अगर ये मेरा थंब है, तो मेरे जो फिंगर्स है वो कंडक्टर के आजू बाजू है, राइट? यू कैन सी हियर माय फिंगर्स आर अराउंड द कंडक्टर. ओके, उसके आजू बाजू है. द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. सो मेरा डायरेक्शन कहाँ कैसे है? मेरा डायरेक्शन उंगलियों का
ऐसे है, right? So how will be the current? The current का direction will be this way, okay? Because my fingers are curled that way. You all can see it here as well. Because the fingers are curled this way, so अगर ऊपर से तुम देखोगे, it will be anti-clockwise. Okay, you all can see the direction over here also. नीचे वाले diagram में direction of magnetic field is this way. और वो magnetic field का direction कैसे पता चल रहा है? From the direction of your fingers. So that's your right hand thumb rule. You all should be able to firstly you all should memorize this particular rule, and you all should be able to explain this rule. Okay, so in this case, if the current is moving from bottom to top, then I will keep my thumb this way, right? तो फिर direction of magnetic field क्या होगा? This way, which is anti-clockwise. Okay, so this way it will be anti-clockwise when the current is moving from bottom to top. समझो, current is moving from top to bottom, then I will have to keep my thumb this way, right? When the current is flowing from top to bottom, I will have to keep my fingers this way. क्यों? क्योंकि my thumb will give the direction of current. तो ऊपर से नीचे जा रहा है current, so thumb is giving the direction of current. Okay, then how are my fingers curled? This way, right? So when my fingers are curled this way, it means the the direction of magnetic field will be clockwise. ऐसे. So direction कैसे है? Clockwise है या anti-clockwise? That will depend on direction of current. Okay, top to bottom है, bottom to top. So now we are also done with right hand thumb rule. Last experiment for the day: finding magnetic field produced by current through a circular loop of conducting wire. Okay, so पहले क्या किया था? सिर्फ एक साइड देखा था, right? और इस कंडक्टर को सीधा रखा था. Now instead of keeping it straight, we are curving it. Okay, उसका एक लूप बना रहे. What is loop? A closed figure. So उसका एक लूप बना के जो दूसरा पार्ट है वो भी कार्डबोर्ड के ऊपर रख रहे हैं. So this blue part is cardboard. Okay, so कार्डबोर्ड बना दिया और यहाँ पे एक लूप बना दिया. So if there's a loop and you flow current through it, you can see here they're flowing current through it, then what is going to happen? Again, if you can see here, if you put iron particles around, small iron particles, iron filings, and you start flowing current through it, you can see the pattern emerging, right? धीरे धीरे pattern दिखने लगेगा. You can see small circles here forming. So they've also given the direction of magnetic field over here. Okay, ये जो black lines है ये सब magnetic lines है. And you can also check the direction of current. यहाँ पे current is moving from bottom to top, right? So bottom to top, then the magnetic field line will be this way, and you can see यहाँ पे direction दिखा है that way. Now here the current is flowing यहाँ से लेके ऐसे, right? So top to bottom flow कर रहा है. So your right hand thumb rule will look like this. क्योंकि top to bottom current flow कर रहा है. So your fingers are curled this way, right? So you can see here the current का direction भी ऐसे ही दिखा है. Okay, great. So we have seen the experiment, we have seen the observations. Now let us see some more observations related to this experiment. Okay, if the current passes through the loop, magnetic lines of force are produced at each point on the loop. That you all can see from this particular diagram. Okay, at every point there is some magnetic field produced because of current flowing through this loop. Next, as we go away from the wire, the concentric circles representing the magnetic lines of force become bigger and bigger. Okay, concentric circles है जिसका center same है. So what they are saying, जैसे तुम वायर से दूर जा रहे हो, वो जो सर्कल्स है वो बड़े बड़े होते जाएंगे. Let us see. यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा सर्कल है, फिर यहाँ पे बड़ा सर्कल, फिर और दूर जाओगे तो और बड़ा सर्कल, और दूर जाओगे तो और बड़ा सर्कल. If यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, you all can see it here also. Here inside there, near the wire, there is a small circle. As you move away from the wire, there are bigger and bigger circles. Okay, यहाँ पे भी same. As you move away from the wire, the circle का size will be bigger. Next, as we go towards the center of the loop, the circle becomes so big that its arc can be shown as a straight line. Okay, यहाँ पे अगर तुम गए तो ये इतना बड़ा सर्कल है कि उसका भी आर्क का भी स्ट्रेट लाइन दिख रहा है. तो कितना बड़ा सर्कल होगा, राइट? दिस लाइन ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ straight line from north, जहाँ पे north to south लिखा है. You can see here also at the center the circle is so big कि almost वो भी straight line की तरह दिख रहा है. For example, circle is also earth is also circular, right? But हमें वो इतना बड़ा circle है earth कि जब when you look at the horizon वो straight line दिखता है. But actual में it is a circle. वो straight line इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारा earth बहुत ज्यादा बड़ा है.
ओके, अगर तुम स्पेस से देखो, बहुत दूर जाके देखोगे, तब उसका कर्वेचर दिखता है। सिमिलरली दिस सर्कल इज सो बिग कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जैसा दिखने लग जाता है। ओके, नेक्स्ट, the magnetic lines of force at the center of the loop and these lines of force at the my let me repeat that sentence. The magnetic lines of force at the center of the loop and these lines of force at the center of the loop are in the same direction. I think I have written it wrongly. Okay, do check this line from your textbook. But what it is trying to say is, see यहाँ पे भी um give me a minute. या सो यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉइंट एस से लेके पॉइंट एन तक जा रहा है। सिमिलरली यहाँ राइट साइड के जो भी डायरेक्शन है पॉइंट एस से लेके पॉइंट एन की तरफ जा रहा है। तो सेंटर में मैग्नेटिक लाइंस का जो डायरेक्शन है वो हमेशा अंदर की तरफ जा रहा है। इट्स गोइंग इनसाइड योर बुक, और यू कैन से फ्रॉम पॉइंट एस टू पॉइंट एन, या फिर यू कैन से फ्रॉम दिस डायग्राम यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक जा रहा है हमेशा। what the direction of magnetic fields of line, it is always going from this part to that part। यहाँ पे देखो, if the arrow is this way here, तो वहां पे arrow ऊपर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे arrow नीचे है तो वहां पे arrow ऊपर हो जाएगा। तो सेंटर में हमेशा डायरेक्शन सेम होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ओके, great. So that's the meaning of this point. Next, the intensity of magnetic field at any point produced by current flowing through a wire is dependent on the current. Okay, कितना intense होगा, intensity यानी कितना strong है। Okay, so how strong, how intense is the magnetic field, वो किस पे depend करता है, current पे। If the current is high, I've written it here in the next point, right? More current is equal to high intensity. Okay, if the current is high, the magnetic field will be very strong. If the current is low, the magnetic field will not be strong, it will be weak. Okay, last, this means that if there are n turns in the loop, the magnetic field will be n times. Okay, so जैसे हम लोग ने देखा, right, करंट अगर ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा। सो अगर समझो मैंने करंट डबल कर दिया तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा। अगर मैंने करंट ट्रिपल कर दिया तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी ट्रिपल हो जाएगा, राइट। सो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द करंट को और बढ़ाने से अच्छा मैं क्या करूंगा, सिंपलर थिंग इज, यहाँ पे देखो, इट्स नॉट मेड अप ऑफ वन वायर, एक ही वायर को बार बार घुमाया, राइट। सो अगर एक वायर को दो बार घुमा दिया तो करंट डबल हो जाएगा, एक वायर को तीन बार घुमाया तो करंट ट्रिपल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे करंट क्या, इसलिए यहाँ पे वायर को बहुत बार घुमाया। इफ यू सी, इज नॉट मेड अप ऑफ वन वायर, ये एक पतले से वायर को बार बार घुमा घुमा के इतना जाड़ा वायर बना है। वो ऐसा क्यों बना है, बिकॉज इट वांटेड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए यू हैव टू इंक्रीज द करंट। सो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द करंट, व्हाट इज द सिंपलर वे टू डू, एक बार घुमाया तुम लोग ने सर्कुलर लूप के लिए, एक और बार घुमाओ तो अभी करंट डबल हो गया, एक और बार घुमाओ ट्रिपल हो गया, एक और बार घुमाओ फोर टाइम्स हो गया। सो इसी तरह अगर समझो तुम लोग ने एन टाइम्स घुमाया, ओके, एन टर्न्स ऑफ द लूप, ओके, एन टाइम्स तुम लोग ने एक ही वायर को घुमाया बार बार, देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी एन टाइम्स, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो वायर का डबल यानी इंटू टू, तीन वायर का ट्रिपल यानी इंटू थ्री, वैसे ही एन वायर का इंटू एन मल्टीप्लाइड बाय एन हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करना है, ऑफ दैट प्रोड्यूस बाय सिंगल लूप, एक एक सिंगल लूप से जो बनता है उसका n टाइम्स। ओके, so that's your last point. So that's it. Let us quickly revise what all we have studied today. First, we have seen that flowing charge, which is current, causes magnetic field. जब भी current होगा वहां पे कोई ना कोई magnetic field होगा। Next, we had seen right hand thumb rule to tell the direction of the magnetic field. Okay, so what does right hand thumb rule tell us? Imagine that in your hand there is a current carrying conductor. Okay, if you have a current carrying conductor in your hand, then your thumbs is telling the direction of current. So अगर thumb ऊपर है यानी करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ा यानी करंट ऊपर से नीचे जा रहा है। ओके, so say for example the current is this way, then okay, let me assume this way। okay, so if this is my right hand and thumb is pointing downwards, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, I'll see the direction of my fingers। okay, my direction of my fingers is this way, right? Direction of fingers is this way, which is clockwise। so that is my right hand thumb rule। if I imagine that in my hand I have a current carrying conductor where
the thumb is giving the direction of current, then my fingers will give the direction of magnetic field. Okay, and here's the diagram for right hand thumb rule. Next, we had seen magnetic field produced around the conductor. Okay, so you make a circuit and you put some iron dust on a cardboard. Okay, so cardboard पे iron dust बनाओगे और उसमें से अगर वो current carrying conductor जा रहा है, then you will see the magnetic field is produced. The magnetic field which is produced will look like this, concentric circles. सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, उस तरीके से दिखेगा. Then we had seen अगर एक सीधा करंट कैरिंग कंडक्टर बनाने से अच्छा हम लोग ने लूप बना दिया, कर्व करके एक लूप बना दिया, लूप यानी क्लोज्ड फिगर. सो अगर लूप बना दिया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखेगा. ओके, एंड वी हैड सीन अ फ्यू थिंग्स अबाउट दीज मैग्नेटिक फील्ड्स, राइट. एक तो हमने देखा कि वायर के पास में छोटे सर्कल्स है, वायर से दूर जाओगे तो बड़े बड़े सर्कल्स है, सेंटर में इतना बड़ा सर्कल हुआ कि वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह दिखने लग जाएगा. देन वी हैड ऑल्सो सीन द डायरेक्शन. सो यहाँ पे भी डायरेक्शन पॉइंट एस से पॉइंट एन तक जा रहा है सेंटर में, और यहाँ पे राइट साइड का भी डायरेक्शन पॉइंट एस से पॉइंट एन में जा रहा है. सो सेंटर में हमेशा एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जाएंगे. सो दीज वर अ फ्यू थिंग्स वी हैड सीन अबाउट दिस पर्टिकुलर we had seen these things for magnetic field of a circular loop carrying conductor. Okay, so that is it for revision, and just check if you have accomplished the objectives, learning objectives for today. Can you explain the magnetic effect of current to someone, either orally to your friend or in written form for the examiner to check and give you marks on that? Can you state the right hand thumb rule right now? Can you say it in English? You don't have to by heart it. Once you understand it, you can just say it in your own words, right? Then can you explain magnetic effect produced by a current through circular loop of conducting wire, right? अगर एक loop बना दिया, circular loop of a conducting wire, तो उसका magnetic effect क्या होगा? Can you explain all the points to a friend again orally, or can you write down everything and explain it in writing so that someone can give marks based on that explanation? Just check that, and if not, then maybe try reading the textbook again, try watching other videos, try watching this video again, try asking doubts, and make sure you're accomplishing the learning objectives. Okay, so that's it for today. I hope you enjoyed and understood whatever I thought. I'll see you all in the next one. Till then, bye and peace.